Let's initiate. Once again, all of you most welcome in this session. Let's start the session with Thomson's model. So what is Thomson's model and what is the key point of Thomson model that you have to keep in mind? So just one point. First point is positive charge is spread over a sphere of size of atom this much radius, and electrons are embedded to make the atom as a whole neutral. These are two very, very important points. Positively charged matter with electrons embedded. So which is plum and which is pudding? Why do we call it plum pudding model? What is plum here? Electron or positive charge? Type in chat box. In this model, the name plum is for electrons or for the positive charge. What is plum? Yeah, plum is negative. Plum in pudding. So just see the whole structure. Positively charged matter is like pudding and then plums are like electrons. Correct? Simple? All right. Now this model was not very much respected that moment because like they rejected it. The reason for this is this shows electron as a stationary objects, right? Electrons are non-moving objects. But multiple other things prove that electrons are also moving objects. And they also objected with this positive charge spread all across. So if you remember last class, I have shown one demonstration in which I have shown how alpha particles deviate from one end to other end. Do you recollect this whole discussion which we had in the last class? Right? So I'll just just remind you the whole discussion once again quickly. Let's see. Just give me a moment. Yeah, just look at your screen. Is the screen visible to all of you? Yes, what you can see on the screen, please type in chat box. Type in chat box quickly. Okay, very good. You can see Rutherford. Okay, Thomson model. Very good. Very good. So now let's initiate this model and try to understand what this model is actually going to do. So if we talk about this model, just see what is showcased here. We have shown here protons, electron, neutrons, and alpha particle. And let me bombard this whole thing with alpha particles. Can you see the movement or deflection? Any deflection can you observe? Let's reduce the energy also. Now see the deflection or deviation. They're going almost undeviated, isn't it? Because this is uniformly charged thing, right? Is that clear? Everyone comfortable with this discussion? Type 1 in chat box. This was your type 1 in chat box if it is clear. Everyone quickly type 1 in chat box. Okay, great. Now, if this is clear, let's go back and understand the other model. What is other model here? So the other model is, let me just go back here. Yeah. Now look at this model. In this model, if you observe, what we can see, just see what alpha particles are coming up and they're getting deviated. If I reduce their energy levels, they get deviated more. See carefully. Okay. Now look at this example where the energy is little high, deviations are slightly less. If even high, it's also correct. Now let me reduce the size of atom by reducing proton and neutrons. Then deviations will be even smaller. Look at this. And if you increase the size of protons and neutrons, like number of protons and neutrons, if you increase, then deviation will be little more, isn't it? So all these things are understandable.
If you reduce the energy, then again it will be more. Look at these points, and then we can talk about this in detail as well. Okay, fine. So this is clear. Everyone comfortable with this part? Right. So now I'll come back to the discussion again, and we'll come back to our class discussions now. I hope this much is clear to everyone. Let's understand what is the meaning of this experiment and what is the understanding of this whole experiment. What do we learn from this, right? And what is the outcome of this whole experiment? That's more important. So when you talk about the first model or Thomson's model, the key problem with this model is everything is stationary. Electrons are stationary, which was completely ruled out. When you go to the second model, which is Rutherford's model, this carried out alpha particle scattering experiment by bombardment of high-speed alpha particle on thin foil of gold. In this model, we understood what kind of deviations are there. What are deviations? Basically, deviations are like if they're moving in a straight line, they are not moving straight line. Once you cross this whole thing, they deviate to certain angles, right? Now, if you look at the whole experiment, what are these angles and what exactly is the direction of this? That we need to understand. Okay. So can we say in this complete experiment, one thing which is very much evident is answer, why alpha particle? Point number 2. This is made up of which atom? Right. So what is the source of alpha particle? Number 3. What is the matter of this foil? Number 4. What kind of deviation we have noted or deviation we have found in the whole structure? So just try to answer these things in chat box one by one. Start with the first one. Why are we taking alpha particle? Quickly try to answer this thing. Yes. Everyone? Okay, high energy. Negatively charged. Alpha particles are negatively charged. Is it true? Think carefully and then try to answer. Is my screen visible to all of you? Okay, fine. Okay, let me just see, like, let me bring all of you quickly here. Just give me a moment. Yeah. Why strength is less today? Everyone, why is strength less today? Just give me a moment. CBSE results are out. Okay, so that is the reason for strength is less. Okay, how is it possible? Results are out, why strength is less? What is the connection between these two things? Just give me a moment. Mine was, what is it? अच्छा, mine was चप्पल मोड. पिटाई हुई. Okay. किसकी किसकी पिटाई हुई है? इन लोगों की पिटाई हुई है. Okay. Maybe some are depressed right now and others are in celebration mode. अच्छा, ये बात भी सही है वैसे तो. Yeah. Now just tell me if you can see the screen. बट जनता काफी कम है आज. 5-6 लोग तो मुझे और यहाँ पे देखने चाहिए. स्क्रीन आपको दिख रहा है?
ओके, चलिए। हाँ, ये सब तो पढ़ चुके हो यार, बिल्कुल पढ़ चुके हो, ये पहले पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा दिया गया है सारा कुछ, राइट? जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स पे बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, बताइए इसका आंसर। अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों यूज किए गए? चैट बॉक्स में क्विकली। हाई मोमेंटम है, ओके। पहले बताओ अल्फा पार्टिकल होता क्या है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? एवरीवन टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? नॉन रिएक्टिव, पॉजिटिवली चार्ज रेज। यार लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन आपको डिस्कस की हुई है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का डबली चार्ज न्यूक्लियस, राइट? If you take helium, which is 2He4, it will carry 2 electrons, 2 protons, and 2 neutrons. अब इसका अगर न्यूक्लियस निकालोगे देन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स तो गए, सो यू हैव जस्ट 2 protons and 2 neutrons। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। पहला पॉइंट समझ में आता है? अल्फा पार्टिकल है क्या? इज इट क्लियर? यस, प्लीज टाइप 1 इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। सर द स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। कितने लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही? ओके, दिख रही है, ठीक है। चलिए, सो अल्फा पार्टिकल्स क्लियर हो गए? जस्ट नोट डाउन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई डू वी नीड गोल्ड? व्हाई थिन फॉइल ऑफ गोल्ड और एनी हैवी मटेरियल इज टेकन? व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? लेट्स सी कितने लोगों को पता है इसका रीजन। मैलेबल है, बहुत अच्छी बात है। आप उससे शीट बना सकते हैं, गुड, दैट्स वन रीजन। कुछ और रीजन भी है या सिर्फ मैलेबिलिटी इज रीजन? मैलेबल तो बहुत सारी चीजें थी, बट गोल्ड ही क्यों लेके आए? एनी अदर स्पेसिफिक रीजन? Large atom size, very good comedy. Large atom size, precisely large nucleus size. Good. That's also true. Very good. Okay. Any other thing you want to add on this? Everyone, please participate. ये सब discussion का topic है यार. Good, good, good. So I hope you know the answers already, right? So let me just go to the different mode. Yeah. So we can say the key thing you already found that this is first, this is a heavy metal. Second thing is it is malleable. You can create thin sheets out of it. So when you did the experiment, what is the key finding of this experiment? Key finding is most of the alpha particles, almost 99%, continued with their straight path. They have no deviation. They had no deviation at all. What is significance of this line? There is no deviation for so many particles. Can I say it means there is lots and lots of free space? Think about this line. There was lot and lot of free space, isn't it? Answer yes or one if it is clear to you. There's a huge amount of free space. Correct? Yes. Now, some of the alpha particles passed very close to the center of the atom and deflected by small angles. Very few particles came back. So if you see, most of the alpha particles continued their straight path. That means most of the space inside the atom is empty. Is this line clear? Everyone, every student, is this clear? Type 1 in chat box if this point is clear. Point number two. Point number two, very few members came back. Yeah, I can see, I think one from almost all of you. Very good. Now, very few members came back means there was some obstruction, which is of very small size. So we have mentioned here, the center of atom is a positively charged body called nucleus, which repel positively charged alpha particles, and that explains scattering phenomenon, right? So if this is an atom, you can say, we give a very simple connection here that if you take a complete city, okay, a big city, and put a drop, okay, or a small pencil sized dot in the whole city,
This is the relationship between atom and nucleus. It's so small. So let's say this is a big structure and I'm just keeping one dot in the center. Okay. That itself explains what is the structure. Okay. So very, very small. So size of nucleus was found to be very, very small. Very, very small. In front of that. How small? We'll discuss that. In what unit it is small, that also we're going to solve a numerical question on this part, right? So size and volume of the nucleus is very small as compared to the total size and volume of atom. Correct. Now there is some amount of what you call maths involved in this discussion. So we'll bring that discussion also. There's something called distance of closest approach. So we need to understand what is meaning of distance of closest approach. That will help us to understand the whole conversation much better. So how many of you have idea about charged particle? Let's say there's a positively charged particle and I approach with another positively charged particle, right? What's your understanding? Will they repel each other or will they attract each other? What shall happen? Type in chat box. What should happen in this? What shall happen in this? Please type in chat box. Yes. What shall happen in this? Just a moment. Yeah, so let me read your comments on this. Repel each other. Positive and positive repel each other. Like charges repel each other. Okay, very good. So if this repulsion is happening, can you tell me that this positive charge, can it reach and strike this positive charge? Can it hit this positive charge? Answer yes or no in chat box. What do you think? Can it come and hit? No. Okay. Okay. What's the reason? Why it can't hit? Anyone would like to come on mic and answer this question? Why it is not possible that it hits? One of you can come on mic and answer. Yeah, Yuvraj. So actually, the nucleus has protons, no, sir, and is positive and has somewhat magnetic field. So due to which, in for only it will deviate, sir. It will not actually hit that. Okay. Okay. So you're Because saying that positive, positive charge will repel positive charge and then eventually it will repel. It will not come. So it will come to some distance or it will just leave from there itself as soon as you strike on it. What shall happen? Can you repeat the question, sir? Will it go to some closer distance or will it just come back from the initial point itself? No, sir, it will go somewhat distant. Okay. Okay. Means it will Very go good. inside Very the good. atom. After that, it will deviate. Very good. So now let me just give you more clarity, everyone. So what is happening actually? See, this is a positive charge alpha particle. And this is your nucleus, right? This is your nucleus. What you're going to do is this positive charge will approach till that point, its velocity becomes almost nil. Okay. So see, it's coming with a lot of energy. If it is coming with a lot of energy, this other positive charge is repelling it. Repelling means it's putting a force on it, right? So this positive charge will keep on coming till the point it is decelerated to an extent that its velocity is almost nil. Try to understand this line first. Or in other way, we can say, if you have initiated this whole movement with v velocity of v alpha value, it will come to a point when this v alpha is becoming 0 or nil. Once it becomes zero, from that point onwards, it will turn back and then go away. Clear? How many of you understand this line? Please type 3 in chat box quickly if this line is clear to you.
Okay. Very good. Almost everyone understood this line. Now, how do we solve this thing in physics? Or we can say, what is the mathematical relation that explains this whole thing? We have to understand that. And how are we going to do that? Let's see. So we can say, at the starting point, at this place, alpha particles have, let's say, energy of half mv square, right? Half mv square is formula for kinetic energy that we use like from ages. We know that, isn't it? And at this point, it is half mv 0 square. There's no energy left. At initial point, when you talk about this distance, let's say it's coming for very, very far. So you will have some kind of energy in terms of potential energy with respect to this positively charged particle. So there's a direct formula that you should know right now, and this will be taught in physics, electrostatics in 12th grade, that we talk about certain forces, right? And potential word. Have you heard of these terms? Force of attraction between two same charges, or force of repulsion between two like charges. Do you have any idea about this? Please type in chat box. Okay, few of you have, few of you do not have. Not a problem. Not a problem. Akash, don't worry. आपको भी समझ में आएगा. पहले इतना समझ में आता सबको, half mv alpha square and half m 0 square, right? अब यार बात करते हैं, this is your kinetic energy. So kinetic energy starting में कितनी है? Half mv alpha square. इधर पे कितनी होगी? 0, almost 0. 0 exactly, right? Because v is 0. What about potential energy? अब बहुत distance से आ रहे थे, बहुत दूर से आ रहे थे, right? So what is the relation of potential energy? You can say K Q1 Q2 divided by R. Okay, that's the result that we use. For force, we use minus du by dr. That becomes eventually R square, right? And a minus sign is kept. So I'm just not using the sign just to show you the magnitude of this whole thing. Is it clear? So when you say K Q1 Q2 upon R, Q1 is charge of alpha particle, Q2 is charge of the nucleus, and R is the distance, right? Initially distances, you're coming from infinite, so it is almost nil. The value will be nil. But later there will be some closest approach distance. Maybe this distance I can call R0. And we can solve this R0 mathematically. So the whole question comes down to a level of this. So just look at this. K Z1 Z2 into E square upon R. What is Z1 E and what is Z2 E? Z1 is Z2 are two positively charged particles, which we're talking about. If it is alpha particle, Z1 will be 2. If it is, let's say, copper, Z2 will be 63, depending on like what exactly is the number, right? So based on that, you can decide the numbers. Is it fine? But eventually half mv square is K Z1 Z2 E square upon R. Is this part clear? If yes, please type 1 in chat box. Everyone? Correct? So we are saying that initially your potential energy is 0 and later your potential energy value is K Q1 Q2 upon R plus 0. These are the numbers. No problem, Vaibhav. You went from 53 to 78.2. I wish for 80%, but could not. Okay. Do not worry. Do not worry. It's all fine. So what is the end result of this whole discussion? Half mv alpha square plus 0 is equal to half m0 square plus K Q1 Q2 upon R. ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? एक बार जल्दी से 3 टाइप कर दो यार चैट बॉक्स में. फटाफट 3 टाइप कर दो. सभी को समझ में आ रही है? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर जाओगे? कर लोगे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड या नहीं कर पाओगे? सब लोग कर लेंगे. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. You will be solving question, don't worry, for better understand. We'll be solving, don't worry. तो यहां तक समझ में आता है? चलो इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. अब ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे? Very few particles are coming back. Majority of particles are moving like this, and few particles are deviating at certain angles. ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए इस पूरे डिस्कशन. Clear everyone? Okay. So learning is clear.
almost all mass of an atom is concentrated in its nucleus with a very, very small sized particle. बहुत ही छोटा सा particle, right? चलो इसकी थोड़ी सी मैथ समझते हैं. So nucleus is a small, heavy, positively charged part of atom that is located at the center of atom, and all the positive charge is present inside the nucleus. अब एक कीवर्ड आपने सुना होगा, न्यूक्लियॉन्स. कितने लोगों ने सुना है न्यूक्लियॉन्स? टाइप कर दो चैट बॉक्स में 1 if you have heard this term, nucleons. Anyone having idea what is nucleons? Protons and neutrons put together are known as nucleons. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. क्लियर? तो अगर मैं से पूछूं हैवी वाटर में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? हैवी वाटर में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? इज अ फॉर्मूला. ड्यूटेरियम is 1H2. D2 is called heavy water. कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? जल्दी से बताओ. पार्टिसिपेट. 3. हैवी वाटर. सिर्फ मैं D2 की बात नहीं कर रहा, D की बात नहीं कर रहा. ओके 19 बोल रहे हैं कुछ लोग. इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 2, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 1. नाउ काउंट कर लो पूरा. कितना आ रहा है? 1H2. 1H2. Heavy water is 1H2, not 1H1. So 1H2 में एक प्रोटॉन into 2, then neutrons 1 into 2, and oxygen 8, 8, 16. Can you count? Very good. What's the final number? Very good. Keep it up. Correct answer is 20. Right. Now write down one more line. The radius of nucleus Rn is given with the formula Rn is R0 multiplied by a raised to power 1 by 3. Just note down. Rn is R0 into a raised to power 1 by 3, where is mass number. And R0 is a constant. So let us suppose I give you a question where I mention, let's say, the value of nucleus size or the value of, let's say, the radius of the given element, right, atom. Then you can use that. Yeah, A is mass number, written here. A is mass number. So for instance, you take aluminium, 13Al27. This will be your A, and this is your Z. Do you understand this? So let's try one question on this, and this will give you more clarity. Question is on your screen. Read it carefully and try to solve. Atomic radius is of the order of 10 raised to power minus 8 centimeter. Nuclear radius is of the order of 10 to the minus 13 centimeter. What fraction of atom is occupied by nucleus? Let's try to answer this question. What fraction of atom is occupied by nucleus? कैसे solve करो? Everyone? यार वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अगर आपको मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हो? You use 4/3 pi r cube. करेक्ट. आपको न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है एंड आपको पूरे एटम का भी रेडियस गिवन है. एटॉमिक रेडियस इज 10 पर माइनस 8 सेंटीमीटर और न्यूक्लियस का रेडियस गिवन है 10 पर माइनस 13 सेंटीमीटर. सो अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आता है, सी दिस डायग्राम.
Okay, let's say this is nucleus and this is your atom. What fraction is occupied by nucleus? क्या ना से ये ऐसा क्वेश्चन हो गया एक स्फीयर के अंदर एक दूसरा स्फीयर और आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंदर वाला स्फीयर है वो बड़े वाले स्फीयर का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. थिंक अबाउट इट and if you can think you can answer this question very easily. Try करें. Let's try to find out answer for this question. You can give your answer in chat box. कुछ लोग तो रिजल्ट पे बिल्कुल एकदम फोकस किया हुआ है, रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. क्वेश्चन सॉल्व करें. 1/10⁻, क्या लिखा है? 5 लिखा है. ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें. ठीक है, देखते हैं सही गलत है. पहले सॉल्व कर लीजिए. व्हाट फ्रैक्शन इज दिस? अदर्स? 1/10⁵. वॉल्यूम निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हो? आपको फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है वॉल्यूम का. यूज इट वाइजली एंड प्रॉपरली. नॉट गेटिंग द आंसर. चलिए, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम विल बी 4/3 pi radius of atom whole cube, and volume of nucleus is 4/3 pi radius of nucleus whole cube. दोनों की वैल्यू तो रखनी है, नहीं कर पाओगे. Try. So we can bring this here, divide it, and can we say the fraction of volume of nucleus in front of volume of atom is nothing but the radius ratios raised to power 3. अब यहाँ की मैथ्स आसान है. कितना हो जाएगा? 10 raised to power -13 divided by 10 raised to power -8 raised to power 3. बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये कितना आता है बच्चों नंबर? 10 raised to power -15. कितने बच्चों को समझ में आता है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. आज एक फास्ट क्विज भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, हीर, युवराज, प्रबल. ओके, कितने लोगों को समझ में आता है? जल्दी से 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में. हेलो सर. या सर -15 मेरा नहीं है, मेरा 10⁻15 आया है, +15. आपने एटम अपॉन न्यूक्लियस निकाल लिया होगा. एक ही बात है ना, मैंने फ्रैक्शन पूछा हुआ है, आपने एटम को डिवाइड कर दिया होगा. राइट, ध्यान से पढ़िए. किसका साइज बड़ा है? एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा है? एटम का. एटम का साइज बड़ा है. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बड़ा साइज नीचे होना चाहिए या छोटा साइज नीचे होना चाहिए? बड़ा वाला. बड़ा नीचे होना चाहिए. फ्रैक्शन निकाल रहे हो आप? यस सर, समझ गए. समझ गए ना? गुड. क्लियर बेटा? सबको समझ में आता है क्वेश्चन? इज इट इजी और डिफिकल्ट? प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स. सबके लिए आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं. इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एंड आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ईच एंड एवरी वन ऑफ. चलते हैं आगे, देखते हैं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10⁻⁻15 टाइम्स. मैंने बता दिया, समझा भी दिया आपको. अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ो उसे. ये क्वेश्चन जे एग्जाम में आ भी चुका है पहले. राइट, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मूला और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है,
और कई जगह पे भी यूज होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहां पे भी कई क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम so as to arrive at a distance of 10 raised to power minus 13 meter? Read the question carefully and try to mention what is the distance of closest approach in this question. Everyone, क्या है distance of closest approach इस question? Quickly try to answer. कितनी पास पहुंच सकता है? 10 power minus 13 meter. अब आपको मैंने आज ही कराया हुआ, इसको यूज करिए। With what velocity an alpha particle traveled towards the nucleus of copper atom so as to arrive at a distance of 10 power minus 13 meter? Try to use this. Any queries you can ask in chat box. Easy है, easy है तो solve करिए, इसका आंसर निकालें। Good. कैसे करेंगे अप्रोच? Let us assume velocity of alpha particle is v alpha. So we can say half m alpha v alpha whole square is the kinetic energy which you have initially for alpha particle. And we are assuming that it's coming from a very, very far distance. So what is initial value of potential energy? 0. कुछ भी नहीं मानेंगे because R का value बहुत बड़ा है, अब बहुत दूर से आ रहा हो तो वो nil के बराबर है। When it approaches to closest distance, what is this term going to become? Please type in chat box everyone. Half m alpha v alpha square की वैल्यू कितनी होगी जब आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे? आंसर करो यार क्विकली। व्हाट विल बी द नंबर? समझ में आ रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पोल कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल रहा है आपके। ट्राई। समझ में सबको आ रहा है? फिर यार आंसर भी कर दो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जब सभी को समझ में आ रहा है तो फिर आंसर भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाफ एम अल्फा 0, वेरी गुड, मतलब 0 बोल दो ना सीधा यार, 0 है, ठीक है, वेरी गुड। प्लस, प्लस के साथ क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 होंगे, और क्या होगा? R होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? दिस वैल्यू इज गिवन टू यू एज 10 raised to power minus 13 meters। ये पहले से पता है अपने को। अब सॉल्व क्या करना है इस क्वेश्चन में? सॉल्व करना है v अल्फा की वैल्यू को। नाउ द की क्वेश्चंस आर, डू वी हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, what is the value of Q1, what is the value of Q2, what is the value of m alpha? ये सब निकाल लोगे, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बट पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई, ये स्टेटमेंट समझ में आती है, then I can talk about numbers and then you can solve this question. But first, give me affirmation in chat box with number 3 that you have understood this equation. जितने बच्चों को इक्वेशन समझ में आती है, वैल्यू छोड़ दो, बाकी इक्वेशन समझ में आती है, टाइप 3 इन चैट बॉक्स। जिन्हें डाउट है एक बार माइक पे आके डाउट अपने क्लियर कर ले, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो किसी को भी कोई डाउट है एक बार माइक पे आप आइए और डिस्कस करिए। ये आकाश। हाँ सर, बताइए सर ये 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू, ये नहीं समझ में कहाँ से लिखें? ये कहाँ से लिखा? यही तो समझाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप ध्यान दें तो अभी अपनी डिस्कशन हुई थी ये वाली, ये वाला समझ में आया था आपको? हाँ, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, हाफ एम बी अल्फा स्क्वायर, इनकी एनर्जी होगी, बाद में इनकी वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है, करेक्ट किया था? सर यहाँ पे 1/2 और m 0 है ना? ना 1/2 हाँ सर, एम वी स्क्वायर, और बाद में 1/2 m0 स्क्वायर हो गया नंबर, ठीक है बेटा, बिकॉज वेलोसिटी 0 हो गई बाद में। जब आप अप्रोच कर गए वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो पता है कि आपने स्पीड से आ रहे हो आप, फिर आप रुके और फिर वापस मुड़े और चले गए, ऐसा हो रहा है। तो जब स्पीड से आ रहे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
यस आप सर, अप्रोच किए, जहां तक आप क्लोजेस्ट अप्रोच थी वहां पे वैल्यू कितनी होगी, 0, देन यू टर्न यस सर, बैक, करेक्ट। तो हम इन दो पॉइंट्स पे एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं, एक तरीके से एनर्जी देख रहे हैं, ये एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए, इस पॉइंट पे क्या यस, एनर्जी और इस पॉइंट पे क्या एनर्जी, दोनों को बराबर कर रहे हैं, इतना सा काम है, कर लोगे। यस सर, So if you just see the equation carefully, it is half mv square plus 0, which is initial potential energy, is equal to initial kinetic energy से अब final kinetic energy की तरफ चलिए, then you can just add the other number k q1 q2 upon r. अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज होती हैं, q1 की वैल्यू क्या होगी, q1 इज चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व है, एक अल्फा पार्टिकल इन्वॉल्व है और एक कॉपर इन्वॉल्व है, करेक्ट। तो कितने लोग Q1 का वैल्यू बता सकते हैं मेरे को चैट बॉक्स में क्विकली, हुई Q1 की वैल्यू कितनी होगी चैट बॉक्स में बता दो, टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज Q1, लेट्स से Q1 अल्फा के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, टाइप कर दीजिए, +2, वेरी गुड बच्चे, कैन आई से 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, Q2 यानी कि न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, आपके पास कॉपर गिवन है, कॉपर इज 30 Cu and yeah, so almost like we can say 29 Cu, and what is the value here, 63.5, ये नंबर होता है। तो चार्ज कितना हुआ इसके पास, ट्राई टू गेट दैट नंबर, प्रोटॉनिक चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा यहाँ पे, टाइप इन चैट बॉक्स, कर पाओगे। कॉपर अपने न्यूक्लियस लिया हुआ है, तो कॉपर में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 29, हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस ई के बराबर, राइट। सो व्हाट शैल बी द अदर नंबर, टाइप इन चैट बॉक्स, वेरी गुड। तो दूसरा नंबर भी आपको पता चल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करोगे इसके बाद, दोनों नंबर पता है, आर हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, लुक एट दिस वैल्यू ऑफ आर, 10⁻³ मीटर इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, एनीवन हु नोज द वैल्यू ऑफ के, सी ऑल द यूनिट्स आर MKS यूनिट, ओके। अभी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, राइट, फिर आपने पढ़ा एरर एनालिसिस, तो डेफिनेटली आपने यूनिट्स का आइडिया आपको होगा, बेसिक यूनिट्स का आइडिया। सो व्हाट इज यूनिट, MKS यूनिट ऑफ के, एनीवन हु कैन टेल मी, कितनी वैल्यू होती है, नहीं नहीं नहीं, के टेम्परेचर नहीं बेटा, वो केल्विन था, अलग है, ये के कांस्टेंट है, ये वैसे पढ़ोगे आप 12th में, मतलब आइडली आई शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू बिकॉज यू आर इन ग्रेड 11, और ये टॉपिक ग्रेड 12th में आता है, बट अगर बाई चांस किसी को पता है, नहीं पता है, नोट कर रहे हैं, कितनी होती है, 9 × 10⁹, वेरी गुड अभिका, वेरी नाइस, राइट। सो ये नंबर्स अगर आपको पता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास भी पता है यार, अल्फा का मास कितना होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट, यस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास 4 AMU, 4 AMU अपने किया हुआ है ऑलरेडी, which is known to you, you can get it in kilograms as well, अगर आपको निकालना हुआ तो कर ले जाओगे, वेरी गुड। तो सब कुछ पता है आपको, निकालना क्या है, व्हाट इज अननोन, V अल्फा। अब यहाँ से काम आपका मैथ्स का शुरू होता है, बट अभी मेरे को उस मैथ्स में नहीं जाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ पा रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ एट दिस मोमेंट। अगर इतनी बात आपके समझ में आती है कि हमने इक्वेशन लिखी कैसे, इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, इफ दिस इज क्लियर इट्स मोर देन एनफ। यस आकाश। सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, Q1 = ये कैसे लिखे हैं, कहाँ से, बेटा Q1 जो चार्ज है वो प्रोटॉन पे चार्ज है, राइट, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, तो मैंने बस यस ई सिंबल यूज किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए। कितने प्रोटॉन्स हैं अल्फा में, 2 प्रोटॉन्स हैं, राइट, सर, क्योंकि ये कैसे 2, 2He4 से आता है,
कैसे 2 हैं मैंने बताया था आज ही, जस्ट बताया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरा डिस्कशन, तो हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि अल्फा पार्टिकल होता क्या। देखो ध्यान से यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स हैं? लुक एट दिस। आज का पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है? यस सर। क्लियर है बेटा? यस आकाश, सर। यस वेरी सर। गुड। सभी को समझ में आता है इतना? इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू? कर लोगे? यस सर हो? बोलो यार। कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सो आई थिंक यहाँ के बाद अब मैथ्स वाला पार्ट, अभी आप बहुत टेंशन मत लो मैथ्स के पार्ट की। आप मेरे को बस ये बताओ कि ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। ठीक है, इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपसे एट दिस मोमेंट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आता है सबको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर ये समझ में आ गया आपको, तो अब ये एक होम असाइनमेंट नोट कर लो कि इसको घर से सॉल्व करना है। और अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, और फटाफट फटाफट 30-30 सेकंड में करने वाले। सो इट्स लाइक रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग। लेट्स स्टार्ट, बिना कोई डिले किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में आ रहा है। एवरीवन, कैन यू सी क्वेश्चन 1? ओके, इसके लिए मैं पोल इनिशिएट कर रहा हूं, आप आंसर करिए। क्वेश्चन 1, the nucleus of element having atomic number 25 and atomic weight 55 will consist of, क्या आंसर होगा? ठीक से करना, गलत मत करना, ध्यान से करो। बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। 22 बच्चों ने इनपुट दिया है इसमें, सारे लोगों ने इनपुट नहीं दिया हुआ है। सब लोग पार्टिसिपेट तो करो यार, गलत होगा सही होगा जैसा भी होगा। एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, बाकी सबने सही आंसर दिए। करेक्ट आंसर इज 25 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स। क्यों होगा इसके पास 25 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स? क्या रीजन? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम एज, यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम एज जेड, एंड जेड आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर एकदम? ओके, जस्ट वेट। क्वेश्चन 1 इज क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आया? चलें अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। पोल शुरू करता हूं मैं इसके लिए। चलिए देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the weight is W, n is atomic number of element, then number of electrons are W minus n, n न्यूट्रॉन्स are W minus n। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ठीक से करो। यस, मेजॉरिटी इज करेक्ट, मेजॉरिटी इज करेक्ट बोल रहा हूं मैं। राइट, सो आई एम एंडिंग द पोल, शेयरिंग द रिजल्ट, लास्ट 2 seconds and done. So what is majority? Majority is B and correct answer is also B. क्लियर है बच्चे? ठीक है, क्यों होगा इसका आंसर ये, कैसे होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रीजन है, एटॉमिक वेट माइनस नंबर इज न्यूट्रॉन्स, राइट? एटॉमिक नंबर इज न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर, आकाश क्लियर है? सर या हाँ सर आकाश ऑप्शन में बताइए। क्या, नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर 8। 1H1 is number of प्रोटॉन कहना चाहता है, वो तो गलत है। थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया ना, बी ऑप्शन से। ये क्वेश्चन नंबर नंबर ऑफ 3 पे चलते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन नंबर तो ऑफ, n के बराबर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन n के बराबर होगा, न्यूट्रॉन्स n हो नहीं सकता। ठीक है, ये ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राई करें, गिव योर आंसर।
The total number of neutrons in di-positive zinc ion with mass number 70. Di-positive zinc ion Zn+2 की बात चल रही है. अब जिंक का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो काम कर जाओगे. जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30. यहां से सॉल्व करने की कोशिश करें. Yes. Very good. Last 5 seconds. Please give input for your answers. Last 5 seconds. जो भी मार्क करना है जल्दी से मार्क कर दो. Last second and done. I'm sharing the result. Again, majority is correct. And the correct answer will be, yes, you have 30 zinc plus 2. You have 30 zinc plus 2. So can we say the question is about number of neutrons, and neutrons are mass number minus atomic number, that comes out to be 40. हो जाएगा? Next question. Question number 4. Poll I am starting. Try to answer. Read the question first carefully. Which of the following are isoelectronic with one another? इनमें से कौन सी चीजें एक दूसरे के isoelectronic हैं, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो. फोर्थ वन. If you have idea about atomic numbers, it will be very, very simple. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नियॉन is 10, potassium is 19, oxygen is 8. Let us see कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं. सोडियम is 11, नियॉन is 10. वही हो गया सॉल्व क्वेश्चन, राइट? Right. So I'm sharing the result, and results are like this. Check please. 74% students ने इसे सही कर लिया है, but कुछ बच्चों ने गलत भी किया है. Correct answer होगा Na plus and Ne, and the reason for why this is the answer or why this is the correct answer, the reason is very simple. Both of them are going to carry 10 electrons each. ठीक है? मजा आया? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दूंगा, राइट? एंड नाउ वी गोइंग टू इनिशिएट मैथ सेशन आफ्टर दिस क्लास. मैथ्स क्लास है अनिल सर का, सो यू ट्राई टू अटेंड दिस क्लास, राइट? एंड टुमारो विल हैव बायोलॉजी क्लास एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. सो एनी डाउट्स, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, यू कैन कम ऑन माइक एंड डिस्कस विद मी क्विकली.